students, very good morning. ଆଜିର ଏ ଟପିକରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମେଟାଲ ରିଆକ୍ଟିଭିଟି ସିରିଜ୍ ପଢ଼େଇ ଦେବି ଯେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ କାହିଁକିନା କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ମେସେଜ୍ କରିଥିଲେ ଆଉ ସାର୍ ମେଟାଲ ରିଆକ୍ଟିଭିଟି ସିରିଜ୍ ଟିକେ ମନେ ରହୁନି ଅର୍ଡ଼ରଲି ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ତ କେମିତି କ'ଣ କରିବା ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ମୋ ଅନୁସାରେ ଟ୍ରିକ୍ଟେ तैयारी करी तुमको वीडियो माध्यम पठेदेवी बोली कहती तो आज से टॉपिकटा पढ़िया ठीक अच्छे तो ये टॉपिकटा एक्चुअली बहुत सहज गोटे इजी वे रे आमे पढ़िया ऑलराइट सो शैल वी गेट स्टार्टेड मेटल रिएक्टिविटी सीरीज सो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज इन फैक्ट is very important reactivity series in the chemistry topic and I would say it's going to be useful in different type of chemical reaction too in terms of single displacement reactions and however it is to be used in electrolysis of any sort of compounds. So first let me get started with the metal reactivity series. The potassium, sodium, calcium, magnesium and aluminum, carbon, zinc, iron, tin, lead, hydrogen, copper and silver, gold. The last but not least is platinum. This series is really difficult to remember in order. So when you keep going bottom to top, that means the reactivity nature increases. Please make a note. If you come down top to bottom, the reactivity decreases. From bottom to top, then reactivity increases. Alright, so their reactivity nature increases from bottom to top, but when you come down from top to bottom, the reactivity nature decreases. Okay, what decreases? The reactivity decreases. That means I would say potassium, this is going to be the more reactive metal. Okay, so this is the most reactive metal. Alright. Metal is going to be the potassium. On the other hand, the least reactive metal is in fact platinum. Okay, so potassium symbol is K, sodium is Na, calcium is Ca, right? Magnesium is Mg, aluminum is Al, carbon is C, zinc is Zn, Zn. Here you located the iron, Fe is basically extracted from the Latin or Greek words ferrum. So symbol is Fe, tin, Sn, lead is platinum, so Pb, hydrogen, H, copper is cuprium. This also extracted from, the symbol is extracted from the Latin word. Okay, silver is argentum, so Az. And gold is aurum, Au, and the last but not least platinum is Pt. So these are the symbol of these elements. Alright, so the most reactive metal is potassium, then followed by sodium. Sodium is not that reactive as compared to the potassium. However, so then calcium, and then comes the moderate reactive elements, and then the least is here the platinum. Alright, so the least reactive is platinum, and the most reactive is potassium. So according to me, as far as I feel that this story can be useful to remember the order of metal reactivity series. That is what I made this story. Okay, so these sentences need to be remembered. Therefore, it's going to help you to memorize the metal reactivity series in order. First one is please stop calling me a careless zebra. Instead, try learning how copper, zinc, gold, and platinum. So a series type of potassium pine. Please stop calling me a careless zebra. Instead, try learning how copper, zinc, gold, and platinum. Please, that potassium to please indicate
Stop is sodium, calling for calcium, M for magnesium, A for aluminum, careless for carbon, zebra stands for zinc here, iron is instant, the tin, tri, lead, learning, hydrogen, how, copper is copper, same as it is, silver, sage, gold, gold, and platinum, platinum. So it has an order of reaction. Order of reactivity series. So reactivity series can be used. So main uses of this reactivity series in the single displacement reactions, right? I may use single displacement reaction. For example, let's say iron metal and we react with copper sulfate. Okay, so we are going to discuss now is about single displacement reaction. Single displacement reaction. Okay, so single displacement reaction कौन ना our element iron and copper sulfate को हमें react करेगा. React कला पर कौन होना ये iron metal का copper metal को ता जगह को remove कर दो. ठीक है. Iron can displace the copper from the copper sulfate. It is a solution. It is a aqueous solution. You can take it our metal. It is solid state. Oh no no. The ये iron का या copper को displace करके copper जगह रे iron पर आसे. तो कौन हो? So ये copper तला से copper जगह क्या आसे? Iron आसे तो iron sulfate है जो copper बाहर पर आसे. तो A type of reaction पर single displacement reaction. बुझा पड़ नथि. एग्जांपल दे. एटी गोटे पिलाटे गोटे मोटा पिलाटे अछि. एटी हमर गोटे पतला एकी बड़ मतलब गोटे पिलाटे अछि. एटी हमर गोटे ब्यूटीफुल मैडम अछि. ओके, ये तगड़ा है देखा जाता है. ये छोटा है मतलब देखिए समान. है ना नहीं? तो ये A पिला, ये B या नॉट B या नॉट C. ओके, जतले हमें A और B सहित रिएक्ट करू छु कोन हो ना ये कि मोटा रोटा खाइ पे पूरा बस देखा जाउ छु. है ना नहीं? तगड़ा है कि इजीली A से हो छु मोर संग तो कोन काम चली से. तो ये आज ये कोन ना मो पावरफुल तो से जगह धीरे आसियो ना कोन कुछ. तो या को ठेले कि या को काट के से निजे ए जगह पहुंच. दैट मींस displace switch the place. तार जगह को ये परिवर्तन करता. तो कौन है ये या जगह को पड़ा है. ठीक है. तो मोटा लखड़ा स्टॉक के पास पड़ा है. तो कौन है A C है गला. तापरे ये पिलाटा जरा देर बड़े बड़ नथला देखा जाता से पिलाटा बाहर पड़ा है. सिंपल. है ना नहीं? तो ये कौन हो काहे एंती एक्सचेंज हो जाए. तो it depends on the reactivity nature. जार पावर अधिक से इजीली ता जगह रो घटै पारिबो. ठीक अछि. तो आयरन रो रिएक्टिविटी सीरीज ए मेटल रिएक्टिविटी सीरीज देखा पड़ो को जगह रे आयरन अछि. आयरन जगह होची एटा कॉपर मेटल रो जगह होची कोड ए तळे. दैट मींस iron होची more reactive than copper. So iron easily remove the copper because iron is more reactive than copper and can form iron sulfate and copper. But तमे कहलो ए रिएक्शन पॉसिबल हो यदि copper बाहर थिबो एका जे कि लेस reactive metal सहित ए iron होची more reactive metal सहित ए sulfate सहित एमा दी जन अछि. तो एके को ए copper टा iron को गुंजै पारे आ जगह को चेंज करि पारे. ये करि पारे ना ना करि पारे हे पारे एठी हे पारे नहीं काई ना कॉपर टा एक्चुअली लेस रिएक्टिव आयरन टा होची मोर रिएक्टिव. तो कॉपर आयरन को डिस्प्लेस करि पारे ना तेनो करि नो रिएक्शन हे पारे. The single displacement reaction says that when more reactive metal displaces the less reactive metal. तो यदि more reactive है तो तबे जाय से गुटे less reactive metal को display करि पाबो ता जगह रो चेंज करि पाबो
से निजे ता जगह पळे आसे तो एटा होचे हमर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एके कोन डाउट रहिला बुझा पड़छ ना एटा इट्स वेरी इजी तो गुडाय एग्जांपल नै पारियो तो एटा तमान को यूजफुल हे पारियो ठीक अछि तो आयरन से तो कॉपर सल्फेट को रिएक्ट करी आयरन सल्फेट हेला कॉपर बिकॉज़ द मोर रिएक्टिव displaces the less reactive metal एटा केवल मेटल मानकर जागा परिवर्तन कथा कुछ नै जोडा के पावरफुल मेटल जरा मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को जागा रो पठे देबो दैट्स इट एटा ही आउट एग्जांपल माने कर एटा अछि मैग्नीशियम आ एटा अछि आयरन सल्फेट फॉर एग्जांपल ठीक अछि एबे सीरीज का देखो मैग्नीशियम रो जागा कोठी तमे को मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव और आयरन इज मोर रिएक्टिव the magnesium here the top I will say right top in the sense the fourth topmost right so iron is jaga hoche 8 so when we go up then reactivity naturally increases therefore the magnesium has more reactive metal powerful so I would say so magnesium is more reactive than iron therefore magnesium easily can display iron and magnesium will come to the place of iron and form magnesium will come to the place of iron and will form magnesium sulfate and iron bare palayla ta jaga kaina is less reactive so in this way you can do this is called single displacement reaction a reaction ta hum kon bolu single displacement reaction boli koi pare all right hopefully you understood so okay तो ए मेटल रिएक्टिविटी सीरीज रो आउट इंपोर्टेंट यूज अछि जोडा कि हम यूज कर पाइबा जते इलेक्ट्रोलिसिस ओके इलेक्ट्रोलिसिस टॉपिक रे हम यूज कर इलेक्ट्रोलिसिस कांसेप्ट तमे जान छी कि इलेक्ट्रोलिसिस बेसिकली द ब्रेकडाउन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स presence of electricity so electrolysis a word रे ही जणा पड़ जाउ जे जहा जब इलेक्ट्रिसिटी यूज होवाटा बाध्य हो ना नहीं तो इलेक्ट्रोलिसिस माने गुडे आयनिक कंपाउंड को एक्चुअली ब्रेक करिया का माध्यम रे ना करंट अप्लाई करे इलेक्ट्रिसिटी रो प्रेजेंस रे इलेक्ट्रिसिटी में जतरा हमें प्रोवाइड करछु हमें जतरा देबा गुडे आयनिक कंपाउंड को से कंपाउंड को ब्रेक डाउन करबा प्रोसेस ता को इलेक्ट्रोलिसिस बोली पाए तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस is also very important electrolysis process मध्ये बहुत जरूरी टॉपिक तो इलेक्ट्रोलिसिस टॉपिक रे मध्ये हमें ए मेटल रिएक्टिविटी सीरीज टा को यूज कर पारिबा ठीक अछि को क्षेत्र यूज कर पारिबा ना फॉर एग्जांपल लेट्स से electrolysis of dilute potassium hydroxide okay a potassium hydroxide को हमें यदि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करे वाले कौन हो व्हाट इज द प्रोडक्ट okay so electrolysis of dilute potassium hydroxide so remember dilute means there will be amount of water more okay the amount of water will be more in case of dilute potassium hydroxide so एठी कोन अछि ना potassium hydroxide ता सहित water मध्ये अछि but simple diagram let us make it for the electrolysis diagram okay the electrolysis diagram रे एटा हछि हमरो electrode ए electrode ता पूरे वायर से कनेक्ट करता एठी पूरे इलेक्ट्रिसिटी बा बैटरी पे लगिदा एठी पॉजिटिव चार्ज एटा नेगेटिव चार्ज ठीक अछि तो एटा को कोन कहबे इलेक्ट्रोड कहबे एटा हमर लोहारे तैयारी बा आयरन और एनी अदर मेटल कैन टेक इट ओके एटा को इलेक्ट्रोड कहबे इट इज द वायर दैट इट इज द वायर ओके तो कोन हो ना एठे potassium hydroxide and water अछि पर जेतरे आमे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करबा ए कंपाउंड तो प्रोवाइड करिया पर मुझे ना देखिए जो वायर का एक्चुअली जो इलेक्ट्रोड का एक्चुअली कनेक्ट है जी the wire negative terminal of the battery is connected to the electrode that electrode is said to be cathode
ए पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी रो जो वायर एट कनेक्ट है एटा मतलब पॉजिटिव हो सो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज सेड टू बी एनोड ओके एटा नेगेटिव बैटरी रो कनेक्शन ए टर्मिनल रो कनेक्शन है तो नेगेटिव साइड रो जो वायर कनेक्ट है इलेक्ट्रोड सो एटा भी नेगेटिव हो सो नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज सेड टू बी कैथोड तो एमन का जस्ट नाम छै कैथोड एनोड कैथोड सब नेगेटिव हो एनोड सब पॉजिटिव ठीक अछि तो ये आपण दिला कंपाउंड अछि जते हमें इलेक्ट्रॉन हमर करंट प्रोवाइड करू छै ए कंपाउंड को ते कंपाउंड ब्रेक हे ठीक अछि सो KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ब्रेक हे K प्लस OH माइनस हे एंड वाटर को जते हमें इलेक्ट्रिसिटी करंट प्रोवाइड करू छै देन वाटर हे जो H प्लस एंड OH माइनस है ठीक अछि तो एठी कोन हो ना इन इलेक्ट्रोलिसिस कोन हो ना ना से माने दीटा से जो वार पॉजिटिव चार्ज अछि नेगेटिव चार्ज अछि एठी हमर एनोड हो पॉजिटिव कैथोड हो नेगेटिव सो जे नेगेटिव ए पॉजिटिव आयन एक्चुअली ताराटा अट्रैक्ट होई और जोटा नेगेटिव आयन पॉजिटिव आयन अट्रैक्ट होई से अट्रैक्ट हेबाटा मध्ये ए इलेक्ट्रोड केवल गोटे आयन के ही रिसीव करियो एटे दीटा अछि K प्लस अछि H प्लस अछि दीटा पॉजिटिव आयन ए दीटा जाको नेगेटिव कैथोड आरे अट्रैक्ट हेबे ए दीटा भितर काको जण को ही अट्रैक्ट हेबा पड़ो तो इलेक्ट्रोड कहले ए दी तमे दी जण भितर के भी जणे आस हाइड्रोजन कहउछ मु आसी थर फाक पोटेशियम भी कहउछ मु मध्ये आसी मु एते पॉजिटिव चार्ज एक रहा कुछ नै मते तर पाखे रहा कुछ तो कैथोड का नाइरा को मोर तो एबिलिटी नै दी जण भितर के जदी जणे आसु भलो कथा नजे दी जण को अलाउ कर पाए सो के हाइड्रोजन प्लस और पोटेशियम प्लस भितर समान को झगड़ा चले भितर मेटल रिएक्टिविटी सीरीज ए हमर कोन ना कैथोड गोटे प्लान कला जे कोन करे दीटा झगड़ा होछंती तो मो पाखे गोटे आईडिया अछि मेटल रिएक्टिविटी सीरीज रे जे सब लेस रिएक्टिव जारो रिएक्टिविटी नेचर के कम ताको इजीली मो एठे रखि पारी मोर आडे त आस पारी कोन हे छी हियर हाइड्रोजन प्लस एंड पोटेशियम प्लस हाइड्रोजन जगह कोठी हाइड्रोजन जगह होची एठी तळे अछि आ पोटेशियम होची सबटु मोस्टली आइ एठी के एटा होची पोटेशियम जस्ट तो एटा होची जे कि मोर रिएक्टिव हाइड्रोजन होची लेस रिएक्टिव होना ना तो इलेक्ट्रोड कहि देला कैथोड इलेक्ट्रोड कहि देला कि जे लेस रिएक्टिव मो पास पास करे तो एठे एबे को हाइड्रोजन लेस रिएक्टिव कि पोटेशियम लेस रिएक्टिव हाइड्रोजन लेस रिएक्टिव तो हाइड्रोजन का पाको अट्रैक्ट हे गला हाइड्रोजन प्लस चार्ज कैथोड नेगेटिव आरे अट्रैक्ट हे गला तो सिमिलरली एपड केवल हाइड्रोक्साइड गोटे टाइप का आयन अछि तो सेमान को दीटा भितर तो किछि फाइट होबनी समान आयन होना ना तो दी जण भितर जणे के भी जाई परबे OH माइनस आयन पॉजिटिव आरे अट्रैक्ट हे तो अट्रैक्ट हेले सिना हेला पर कोन हो ये आयन भी रिएक्ट छावने मुकर मु गैस स्टेट है कि हाइड्रोजन गैस स्टेट रहया पर्पस तो एठे हाइड्रोजन कैथोड माने एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉन अछि इलेक्ट्रॉन को आराम से रिसीव करके हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ता को गेन करके तो हाइड्रोजन केतना इलेक्ट्रॉन ये दीटा इलेक्ट्रॉन गेन करके दीटा हाइड्रोजन दीटा गेन करके हाइड्रोजन गैस एक रहया इच्छा गले तो हाइड्रोजन गैस कोट प्रोड्यूस हो कैथोड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस आओ ए हाइड्रोक्साइड कोन हाइड्रोक्साइड आयन एटा अधिक इलेक्ट्रॉन अछि ये लूज करियो इलेक्ट्रॉन ये कोन करियो तो हाइड्रोजन लूज करियो और इलेक्ट्रॉन लूज करके एटू वाटर कैरी करियो और ऑक्सीजन मध्य ऑलराइट तो या जगह के हेतो ना हाइड्रोक्साइड आयन अट्रैक्ट हेकी कोनो वाटर और ऑक्सीजन गैस को प्रोवाइड करे तो ए एनोड को गैस बाहर ऑक्सीजन गैस और कैथोड हाइड्रोजन गैस तो ए जे हाइड्रोजन जे दीटा इलेक्ट्रॉन गेन करे कि जे हाइड्रोजन गैस हला ए गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहबे रिडक्शन प्रोसेस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहबे रिडक्शन प्रोसेस तो ये जे चारटा इलेक्ट्रॉन लॉस करे कि ऑक्सीजन गैस भी बनेला और वाटर भी बनेला एटा कोन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हलाइट इलेक्ट्रॉन टा को लूज कला तेन करे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन
ओके सो एट ए टाइम दीटा प्रोसेस हे गेला हो ना गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हैला लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हैला तो रिडक्शन भी हैला ऑक्सीडेशन भी हैला तो ए दीटा प्रोसेस एट ए टाइम हेबारे मान कहला रिडक्स रिएक्शन ओके इट RED for reduction, ox for oxidation. So whenever the electrolysis takes place, by the time there are going to be two type of chemical reaction at same time, I mean simultaneously. So that reaction also said to be redox reaction. So a redox reaction में कौन है ना हमें metal reactivity series टा को follow करो. So this is said to be electrolysis of dilute potassium हाइड्रोक्साइड बुझा पड़ला तो एटा होची इजी कॉन्सेप्ट